Okay, let's start. Already we discussed on classification of ligands. Classification of ligands रे हमें दुईटा पार्ट कर सारिछु. नंबर 1 रे थिला on the basis of charge, नंबर 2 रे थिला on the basis of denticity, नंबर 3 रे on the basis of chelation. On the basis of chelation. Very important. Entrance point of view. On the basis of chelation, ligands are classified into two types. One is chelating ligand, chelating ligand. Another is non-chelating ligand. Non ligand number 2 रे non-chelating ligand. Okay, तो शुरू करियो फर्स्ट में what is chelating ligand. The ligand which form a ring-like structure with metal atom. The ligand which form a ring-like structure with metal atom is called chelating ligand. ताला में लिखियो भाई the ligand which form a ring-like structure with metal is called chelating ligand. For example, भाई इथिलीन डायमीन short रे EN. ताले इथिलीन डायमीन नो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमें जानिछु CH2 CH2 NH2 NH2. ओके भाई ताले इथिलीन डायमीन रे किए अछंती रे डोनर एटम ना ऑलरेडी हमें पढ़ी के आस्तिलु नाइट्रोजन. ताले केते मेंबर इनफॉरमेशन हला रे भाई ना एक एटा एक तमे जोटा दउछथि सेमति कि ने 1 2 3 4 5. ताले we get a 5-membered ring like structure. Hence En is called chelating ligand. 5-membered ring गोटे फॉर्मेशन है भाई. ओके क्लियर. चलो आगे चलता हूं भाई. नंबर 2 एग्जांपल ले C2O4 2 minus. In case of C2O4 2 minus, in C2O4 2 minus लक्ष्य करते हैं भाई डोनर एटम बीटा ऑक्सीजन मेटल सहित कनेक्ट we get a here also 5-membered ring 1 2 3 4 5 5-membered ring. Hence C2O4 2 minus is behave as a chelating ligand. Another example SCSC एसिटाइल एसिटानाटो स्ट्रक्चर करबा जदी एसिटाइल एसिटानाटो रे भाई this is acetyl acetanato ligand SCSC एसिटाइल एसिटानाटो ligand रो डोनर एटम ए भाई ताले लक्ष्य करे रे एटी केते मेंबर इनफॉरमेशन हे जी 1 2 3 4 5 6. Here we get a 6-membered ring. ताला में एठुटे 6-membered ring structure formation करि पालु. Hence it is called a chelating ligand. ताले chelating ligand रा important example नेलु En C2O4 minus SCSC. आउ गोटे important कथा भाई कौन से important कथा ना on the basis of thermodynamically stability concept 5-membered ring is
more thermodynamically stable generally, but generally generally 5 membered ring 5 membered ring is more stable than 6 membered ring. 6 membered ring. 6 membered. But in some time or in some case, or in some case, the alternate is true. 6 membered is greater stability than 5 membered ring. Question ଆସିଲା ଭାଇ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ 6 member ଟା 5 member ଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ହେଲା ଭାଇ ନା ସେତେବେଳେ 6 member ring ରେ aromaticity arise କରିଥିବ କିମ୍ବା delocalization of pi electron ଥିବ aromatic character ଆସୁଥିବ aromatic character or delocalization of electron होथिबो delocalization aromaticity आसुथिबो कि delocalization of electron आसुथिबो सही केस रे 6 member ring is more stable example सही SC ligand भाई लक्ष्य करो एठी ऑलरेडी मैं आउथरे कर दोची एसिटाइल एसिटानाटो एई रे देखो रे एसिटाइल एसिटानाटो रे एई एई रे बाबा बाबा ताले मेटल सहित जो बॉन्ड फॉर्मेशन हेची ताले एसिटाइल एसिटानाटो लिगैंड रे delocalization of pi electron होची दोन चार दुई छटा पाई इलेक्ट्रॉन एटी पार्टिसिपेट करूची तेन करी हमें कहूचु लाइक एरोमेटिक कंपाउंड किंबा एरोमेटिसिटी टाइप रो ओके भाई ताले इन जनरल 5 membered is stable than 6 membered but in some time 6 membered is more stable than 5 membered when aromatic character किंबा delocalization of pi electron present. Okay, this is all about chelating ligand. ताले chelating ligand हमें कहा कहबा ना जोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुए एबे जीवा सेकंड कैटेगरी जो था हमर नॉन chelating ligand नॉन chelating ligand नॉन chelating ताले नॉन chelating ligand कहा को कहबा ना जो माने रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करू नहंती a ligand which does not form or do not form a ring structure ताले chelating ligand को छाड़ी देले जो माने रही गले से माने ले नॉन chelating ligand जेमिति कि NH3 H2O फॉर एग्जांपल NH3 H2O जते सब मोनोडेटेड वाला H2O F minus Cl minus Br minus these are the example of non-chelating ligand okay clear चलो आगे भाई next category on the basis of interaction 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 ligands are divided into two types one is classical ligand another is non-classical ligand गोटे हला भाई क्लासिकल आ गोटे हला नॉन क्लासिकल हिप हॉप कहबोनी क्लासिकल डांस आ गोटे कहदो हिप हॉप डांस not this is classical and non-classical ligands okay भाई देखो ताले in case of classical ligand को माने कहिबा ना जो ligand माने केवल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करूथिबे the ligand which donates
इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मेटल एटम जे केवल मेटल एड को इलेक्ट्रॉन दो नॉन क्लासिकल कहा कोई बारे भाई एटी खेला है रे भाई लिगेंड मेटल को तो दउथबो along with मेटल पाखरु भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवार टेंडेंसी रखिथिबो ताले एटी दबो भी नबो भी these are also known as pi acceptor ligand कौन कहिबारे भाई एमान को हमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहिबा ताले ये हला केवल इलेक्ट्रॉन देबे एमाने देबे भी नेबे भी एग्जांपल CO वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल भाई Cn माइनस ताले they have tendency to donate and have tendency also accept electron from the metal atom তাহলে আর एग्जांपल যদি আমি নেব NH3 H2O एटसेट्रा তাহলে অলরেডি আমি লিগ্যান্ডস মানকৰ ক্লাসিফিকেশন কৰিলো this is all about the classification of ligands তাহলে নিহাতি সমস্তে ভালো ভাবে পড়িবো বারম্বার রিভিজন করিবো এবং খাতাটাକୁ নোট কৰি ৰাখিব ভাই କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ क्विक रिवीजन कर दो जाऊ थरे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स रे कोन कोन हमें एटी स्टडी करलु ना नंबर 1 रे देखलु ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज on the basis of charge ligands are classified into three types one is negative neutral positive second golu on the basis of denticity कौन देखलु सिटी on the basis of denticity number 1 रे भाई monodentate a ligand which have one donor atom are known as monodentate ligands bidentate which have two donor atom and simultaneously bonded with metal again the bidentate ligand are divided into two types one is symmetrical and unsymmetrical in case of symmetrical two donor atom are same in case of unsymmetrical two donor atom are different तापर आपको आगे गलु भाई ट्राइडेंटेट सिमिलरली तीनटा डोनर एटम थिबो टेट्रा पेंटा हेक्सा हेक्साडेंटेट हम गोटे एग्जांपल नेथिलु कोन ना हेक्साडेंटेट रो एग्जांपल नेथिलु हम ईडीटी तापर आपको आगे गलु फ्लेक्सिडेंटेट लिगैंड का कहबा ना जे तारो डेंसिटी को चेंज करि पारे एग्जांपल हम नेथिलु CO32 NO3 NO2 एसिटेट आयन दिस आर द एग्जांपल तापर आपको आगे गलु पॉलीडेंटेट पॉलीडेंटेट का कहबा ना जहां पाखरे मोर देन वन डोनर एटम थाए ओके तापर गलु एम्बिडेंटेट लिगैंड का कहबा ना द लिगैंड व्हिच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम बट बिहेव एज ए मोनोडेंटेट लिगैंड ओके एग्जांपल तीनटा थला वेरी इंपोर्टेंट Cn NO2 Hcn ता रीजन भी एक्सप्लेनेशन करा हिच भाई देन आपको आगे गलु ऑन द बेसिस ऑफ किलेशन को बेस करी दुई टाइप रे करा हिची उटेला चिलेटिंग लिगैंड उटेला नॉन चिलेटिंग लिगैंड चिलेटिंग लिगैंड का कहबा ना जे रिंग लाइक स्ट्रक्चर करूची नॉन चिलेटिंग का कहबा ना जे रिंग लाइक स्ट्रक्चर कर नाही एग्जांपल चिलेटिंग रो मॉडल भाई En देली C2O2 देली SES देली लास्ट वन देला on the basis of interaction two types उटेला क्लासिकल उटेला नॉन क्लासिकल क्लासिकल ले केवल लिगैंड रो काम मेटल को इलेक्ट्रॉन दबो नॉन क्लासिकल ले इलेक्ट्रॉन दबा सहित नै भी परिबो these are also known as pi acceptor ligand very important तार बारंबार पढ़ो एवं समस्त को शेयर मध्ये कर दियो समस्त पढ़ो एवं सिखो तले एठी हमें लिगैंड रो क्लासिफिकेशन को रखुछु आगामी अध्याय स्टार्ट करिबु द IPSC nomenclature of coordination compound okay done by